सांप्रतिक कोरोना महामारी कराल रूप सारा विश्व को कबलित करिछि। जीवन मृत्युर एभली एक घड़ीसंधि मुहूर्त तालचेर स्थित कलिंग डीएवी विद्यालय में पालित हो जाइछि एहार गौरवमय 25तम प्रतिष्ठा दिवस। विद्यालय निकट अतीत अति आडंबर सहित रौप्य जयंती उत्सव पालन करथिला। मात्र वर्तमान परिस्थिति को दृष्टि रखी कोविड-19 समस्त नियम को अनुसरण करी ए समावेश जरिया रे ऑनलाइन बा वर्चुअल उत्सव पालित हो जाइछि। Has immensely multiplied the greatness and grandeur of knowledge and wisdom, rendering many veterans awe-inspiring alumni to lead the nation and the forthcoming world with the values and virtues of the Arya Samaj. But the making of this endeavor of Silver Jubilee celebration extends the greatness and sincere dedication and the limelight foresight of our enthusiastic principal sir, Shri S.K. Bhoi sir, who paved this way for a year-long celebration with festivity and zeal, accelerated with relentless efforts of our lovely teachers and devoted student companions. And the marvelous way through which the school had been imparting the spirituality, peace and love runs deep through the veins of every individual right here, like the bequest to the great one, and for us, it's our lovely DAV Kalinga fraternity. We extend our heartfelt gratitude to all the teachers, escorting staff, student fraternity and every single person involved in making this year-long celebration filled with joy, enthusiasm and enchanting moments for our school. And since legends say, to face the obstructions, to learn from misconceptions, to rise after your falls, to vibe at the calls, to overcome the invincible, to achieve the impossible. This is what life is all about. This is what DAV Kalinga is all about. His innovations, his perseverance have taken us to even greater heights. He is a true captain with volumes of vivacity and a variety of inspiring ideas. Now, let's invite the wings of our flight, pillars of our strength and our constant source of motivation, Honorable Principal DAV Kalinga, Sri S.K. Bhoi sir, to light the holy lamp to inaugurate this auspicious event. I would also like to call other teachers. Hallelujah.
auspicious moment, a pious hand planted a sapling 25 years ago. He sprinkled it with his sweat drops. The visionary, the man with Midas touch, he is none other than Shri Ellen Pradhan Sir. The school requests Honorable Shri Ellen Pradhan Sir, Regional Officer, DV Institution, Odisha Zone 2, and the founder principal of this school to bless us on this occasion. DAV Kalinga family is indebted to Shri Ellen Pradhan Sir for his sincere guidance and all-time blessings. So please. Dear teachers, students, and the principal, Mr. Bhui of the great institution, DV Public School, Kalinga area. It's really heartening to learn that the school has successfully completed its Silver Jubilee year. I convey my heartiest congratulations to the children, teachers, management, and most importantly, the parents of the school on this occasion. I recall the gorgeous celebration of Silver Jubilee function held on 20th November 2019 and felt the enthusiasm of the students and teachers. I was a bit apprehensive that in this unprecedented pandemic situation, how the children would celebrate the closing day of their Silver Jubilee. The invitation card when I received, the invitation card of the celebration reflects that this pandemic cannot be the hurdle in the path of enthusiasm of our brave children. Our children have proved that they are ready to face any type of challenges in their life. They can convert crisis to the opportunity and they can change the frustration to creation. Dear students and teachers, this pandemic have taught us lot many things. This virtual meeting, boundaryless classrooms, free from chalked out timetable, learning in their own pace without any peer pressure, attending online classes, participating in online competitions, exploring the things to learn in their own way, so on and so forth. डीएवी गायनर कार्यक्रम शुभारंभ होता कार्यालय स्वनामधन्य अध्यक्ष श्रीजुक्त सुरेन्द्र कुमार भोई उद्घाटनी अभिभाषण प्रदान करते। विद्यालय परिसर में सीमित शिक्षक कर्मकर्ता और छात्र छात्री द्वारा एक औषधीय वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित होता। वैदिक यज्ञ अनुष्ठित होता। एमसीएल हिंगुला क्षेत्र साधारण परिचालक तथा स्कूल एलएमसी अध्यक्ष टेली संवाद माध्यम निजर वक्तव्य रखिते। ऑनलाइन माध्यम विभिन्न प्रतियोगिता अनुष्ठित होता। छात्र छात्री शिक्षक और अभिभावक मान द्वारा विश्व शांति और निरामय जगत उद्देश्य निज निज घरे वैदिक रीति प्रदीप प्रज्वलन संपादित होता। विद्यालय प्रतिष्ठाता अध्यक्ष तथा वर्तमान डीएवी ओडिशा जोन 2 आंचलिक अधिकारी श्रीजुक्त लोकनाथ प्रधान निजर आशीर्वाद वार्ता प्रेरण करने सहित विद्यालय उत्तरोत्तर उन्नति कामना करते। शेष छात्र छात्री द्वारा प्रस्तुत चित्ताकर्षण और मनलोभा नृत्य को भर्चुआली प्रसारण कर छात्र छात्री मैंने निज घरे रही उपभोग करते। उत्सव में शिक्षिका प्रभारी श्रीमती हितृषी सामल, श्रीजुक्त प्रदीप कुमार महंती, कृष्णा महंती, डॉक्टर कृष्णा कन्हैया आचार्य, मानस रंजन पुष्टि, विकास चंद्र भोई, सौम्य दर्शिनी शतपथी, पवित्र मोहन शतपथी, देवी प्रसाद प्रधान और अन्य शिक्षक और कर्मकर्ता प्रमुख सहयोग करते। ए संपर्क में विद्यालय अध्यक्ष श्रीजुक्त भोई कहते कोविड-19 व्यापकता और भयावहता को लक्ष्य कर ए वर्ष ऑनलाइन माध्यम भर्चुआल उत्सव पालन कर गौरवमय विद्यालय गारिमा को अक्षुण्ण रखा सहित महामारी समय छात्र छात्री को उन्नत मानर शिक्षा जोगाई देवाक ऑनलाइन समस्त व्यवस्था कर छात्र छात्री सर्वांगीन उन्नति डीएवी कलिंग सर्वदा चेष्टित और प्रतिश्रुतिबद्ध। अनुगुल शेख जुल्फिकर रिपोर्ट, समय लाइव। देश दुनियार बड़ खबर, राज्यर प्रतिटी खबर भिन्न शैली रे भिन्न ढंगरे आमे पहुंचाइबो आपनक पाखरे। सेति पय हमरो फेसबुक पेज को लाइक करंतु, यूट्यूब रे हमकु सब्सक्राइब करंतु।